Hello, my dear children. Welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in computers, today we will continue with the chapter 6, that is working with Flash CS3. Let's get started. Let's continue with setting document properties. Each time when we open Flash, the application opens a new file with the default setting for the movie properties. We can create a new movie as we work. To set the frame rate, background, color and ruler units, we use the following steps. ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं. We have to click on the file, then the new document dialog box will appear. Select the flash file, action script 3.0 option in the type list. ठीक है, ये आ जाएगा. Then click OK. Then we have to go in the modify and then in document. The document properties dialog box will appear as shown in the figure. To change the frame rate, what we have to do is specify the speed of the movie in frames per second. By default, we have 12 FPS, that is frame per second, as the frame rate. We can change it as 8. Okay, we can write 8 here. To specify the stage size in pixels, enter the values of width and height in their corresponding text boxes in the dimensions section. To set the background color of the document, choose any color for the background color swatch. ठीक है, यहाँ से हम background color change करेंगे. To set the stage size to the maximum available print area, click the ratio button printer under match section. Select the unit from the drop down list of the ruler units and then what we will do, you have to click on OK after specifying the required options. And इस तरह से हम पूरे अपने document के properties को set कर सकते हैं. Here we have a quick view. To make the properties panel visible on the screen, we have to press CTRL plus F3. Here one more thing we can know, that is CTRL plus J is a shortcut key to display the document properties dialog box. Okay. Now let us talk about drawing an object and grouping outline with fill. When we make a drawing in Flash, it actually creates two objects, the fill and the outline. जब हम कोई drawing बनाएंगे, fill and outline दो object बनेंगे. To manipulate elements as single object, we have to just group them. So select the pencil tool, select the brown, the stroke color and the fill color. ठीक है, यहाँ पे हमने brown, stroke color और fill color ले लिया है. And we are drawing the stem of the tree as shown in the figure. इस तरह से हमने tree की stem यहाँ draw कर ली है. Now choose the selection tool and move the mouse pointer on the tree trunk. A curve is displayed below the arrow. इस तरह से एक arrow आएगा. Hold down the left mouse button and drag the lines to give a proper shape. इस तरह से हम proper shape देने के लिए माउस पॉइंटर को यूज करेंगे. Here select the pencil tool and choose the smooth mode. पेंसिल टूल का स्मूथ हम मोड ले लेंगे and select green as the stroke and fill color. हमने stroke and fill color क्या ले लिया, green. Now draw the curves of the tree top as shown in the figure. इस तरह से हम tree का top पूरा draw कर लेंगे. Now select the paint bucket tool and click inside the tree top. इस तरह से हम इसमें green color fill कर लेंगे. Similarly fill brown color in the stem. Okay. Then select the selection tool and double click on the tree top. इस तरह से हमारा tree top जो है वो पूरा select हो जाएगा. Now we have to just drag the tree top over the trunk. हमने इसको tree के ऊपर रख दिया है. Now choose the selection tool and then select the tree by dragging around the tree. Okay, इस तरह से हमारा पूरा tree select हो जाएगा. Here we have a note point. To select both the object, choose the selection tool, hold down the shift key and double click on the objects. Then select modify and group. अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, दोनों को क्लिक करेंगे. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई ग्रेडियंट फिल. सिलेक्ट द ट्री यूजिंग द सिलेक्शन टूल. सबसे पहले हम ट्री को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से. ओके, देन वी हैव टू सिलेक्ट द पेंट बकेट टूल. अब हम पेंट बकेट टूल ले लेंगे कलर करने के लिए. नाउ क्लिक द फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो टू गेट द कलर पैलेट. ओके, देन सिलेक्ट द ग्रेडियंट इफेक्ट एंड क्लिक इनसाइड द. यहाँ से हम ग्रेडियंट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे. द ग्रेडियंट विल फिल द शेप. हियर वी हैव अ क्विक व्यू. टू ग्रुप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मेक यूज ऑफ CTRL प्लस G की कॉम्बिनेशन. हम ग्रुप का जो हमें ऑप्शन है वो मॉडिफाई के अंदर भी मिल जाता है और वी कैन यूज CTRL प्लस G. हियर वी हैव क्रिएटिंग अ न्यू ग्रेडियंट. अगर हमें न्यू ग्रेडियंट क्रिएट करना है देन वी हैव टू काइंड्स ऑफ ग्रेडियंट, लीनियर एंड रेडियल. Linear gradient changes color from the starting point to the end point of a straight line and radial gradient changes color to the circular outward direction from the center. Okay, so let us see how to create a new gradient. We have to follow some steps. Firstly we will select the stem of the tree. सबसे पहले हम stem को select करेंगे. Then we have to go in the window and color mixer to display the color mixer panel. विंडो के अंदर कलर मिक्सर पे हम जाएंगे, हमें यहाँ पे पूरा एक पैनल मिल जाएगा.
click on the drop down arrow of fill style box and select either linear or radial. अब यहाँ से linear और radial जो हमें चाहिए ले लेंगे. Then double click on the left color marker. The color palette appears. इस तरह से color palette आ जाएगी. Select the brown color. ओके यहाँ से हमने ब्राउन कलर लिया. सेलेक्ट द पेन बकेट टूल एंड क्लिक ऑन द स्टैम्प. अब हम पेन बकेट टूल लेंगे और जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टैम्प. डबल क्लिक ऑन द राइट कलर मार्कर एंड देन सेलेक्ट द ऑरेंज कलर. ठीक है, अब हमने ऑरेंज कलर लिया. नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो बिलो द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड सेलेक्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल्स पैलेट. क्लिक ऑन द स्टैम्प filled with gradient fill. The gradient transform controls the appearance on the stage around the object. To rotate the gradient fill, drag the gradient rotate handle to rotate the linear gradient clockwise as shown in the figure. इस तरह से हम rotate भी कर सकते हैं. A bounding box with editing handles appears. To scale a linear gradient or a file, drag the square handle at the center of the boundary box. इस तरह से हम इसको resize भी कर सकते हैं, transform कर सकते हैं. To change the focal point of the circular gradient, what we have to do, drag the middle circular handle on the bounding circle. Okay, इस तरह से हम इसका focal point पूरा change कर सकते हैं using the mouse. Okay, now let us see how to modify a linear gradient. Draw a tree on the stage and fill a linear gradient, color in it. ठीक है, हम इसको select करेंगे. Then let us now modify the gradient fill in the shape by using the gradient transform tool. Gradient transform tool लेंगे, select the upper portion of the tree. Now select the gradient transform tool in the tools panel. Here click the object filled with gradient color in it. Now the bounding shape will appear as shown in the figure. Now let us see changing the center of the gradient. How to change it? The center point of the gradient is the place where all the mixing colors are present in the equal proportion. To change the center of a gradient, use the following steps. So what we have to do, bring the pointer over the center point. Okay, then drag the center point in a desired direction to change its position and observe the changes. Here now let us see how to change the width of the gradient. To change the width of the gradient filled inside the shape, we have to follow some steps. What? We have to firstly position the pointer over the width adjustment handle and then it will change to a double-sided arrow. Here, drag the adjustment handle to the left or right to increase or decrease the gradient width. Okay, now let us see how to rotate the gradient fill. To rotate the gradient color fills inside a shape, follow these steps. Position the pointer over the rotation handle and then the pointer shape changes to this symbol. Here, drag the rotation handle clockwise or anti-clockwise according to the need and observe the changes. Okay, this way we can rotate the gradient fill. Now let us see how to modify a radial gradient. Likewise, you can modify a radial gradient color filled inside the tree. हम लोग जैसे हमने linear किया वैसे हम radial को भी gradient को भी modify कर सकते हैं. We have to use the gradient transform tool. Select the upper portion of the tree. सबसे पहले हम select करेंगे. Then now select the gradient transform tool in the tools panel. Okay, and then click on the object. Object पे click करेंगे. The bounding shape will appear as shown in the figure. Okay, now you can see the center of the gradient. ठीक है, you can drag the center point to the change the starting point of the color mixer of the gradient and then you can drag the rotation handle clockwise or anti-clockwise to rotate the gradient as requirement. You can drag the width adjustment handle to increase or decrease the gradient width and you can drag the diagonal resize handle to alter the gradient size proportionally. Okay, so this way we can modify the radial gradient. Here we have a quick view. The shortcut for the pencil tool is Y and for the selection tool is V. Okay, these are the shortcuts. So now we have completed this part. This much for today. Thank you. Bye-bye.